हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज भी हमारा कंप्लीट लैंडिंग पेज डिज़ाइन है जो एक्चुअली आपकी फूड डिलीवरी सर्विसेज और बिजनेस पे डिपेंडेंट है। जो आज का जो डिज़ाइन होगा कुछ हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं लोगों की प्लेसिंग्स विदाउट नेविगेशंस एंड देन हीरो सेक्शन, और इसमें एक स्लाइडर है जो आई थिंक देयर आर 2 स्लाइडर्स है special items के लिए, and then there are other sections too for the veg non-veg items, and then for the downloading app section और FAQ section, फिर आपका testimonial slider and the last one is footer। ये हमारा डिज़ाइन completely responsive ही होगा as always। तो चलते हैं इस डिज़ाइन के एक्चुअली डिज़ाइनिंग पे। सो सबसे पहले हमारा जो रिक्वायर्ड आइकन्स वगैरह है वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है एंड इमेजेस ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स फाइल चाहिए, देन फॉर स्टाइलिंग वी नीड अ CSS फाइल, देन JS। इसमें हमारा एक कॉमन इंडेक्स हो गया। देन टुडे टाइटल विल बी फूड डिलीवरी लैंडिंग page। Let's connect the script, with default, and then let's connect the CSS। सबसे पहले हमारा navigation, will have header with row and container class, फिर हमारा लोगो, एंड देन फॉर द टॉगल मोबाइल व्यू के लिए हमें चाहिए। सो लेट्स कॉपी दिस क्लास, ऑन क्लिक दिस विल टॉगल, देन फॉर मोबाइल व्यू नीड द नेविगेशन UL with row, then list with a tag inside, just put it home, contact list आप increase कर सकते हैं as you required। so let's save it, लाइव करके चेक कर लेते हैं इसे। let's put it side by side। सबसे पहले इसमें इस सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है आपका फॉन्ट। सो दिस विल बी अ रोबोटो, दो फॉन्ट का मिक्स है, एक डांसिंग एंड देन अनदर इज रोबोटो। लेट्स इंपोर्ट दिस वन टू CSS। द कॉमन फॉन्ट विल बी रोबोटो। तो चलते हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर बिफोर सो बॉक्स साइजिंग विल बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट वेट 400, मार्जिन 0, padding also 0। Now let's go for color bar। There will be 4 colors in this, F8, F8, and F8. Another is T100 3F, another is black color, the last one is white। Yes, number the navigation bar 3, 4। हमारा बैकग्राउंड जो कलर यूज करेगा वो है
bar 1 एंड फॉर ऑल ओवर पेज में हमारा टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा bar 3. Let's put the image max width will be 100% and for O display inline block text decoration none and transition 0.5 second is an out. ये हमारा A tag में होगा and then let's put the UL with the list style none and now common classes display flex. We are going to use that column also, so this will be a display grid and there will be one grid common class that will be grid template repeat auto fit होना पड़ा and minimum maximum कार्ड का हमारा 300 पिक्सल and 1 FR. The gap between will be 2 em and another common class we have is container that will have the max width 90% margin 0 auto. ये कंटेनर के लिए एक मीडिया सेट करना पड़ा जो above means let's put that one minimum width 1400 पिक्सल तक. ये कंटेनर हमारा मैक्स विथ 1350 पिक्सल रूल फॉलो करेगा. कंटेनर साइज हमारा न रहना. अब एग्जैक्टली लेट्स गो फॉर द जो हमने HTML में इनपुट किया था वो नेविगेशन. सो here the header will have a line item center justify contain center and cap will have 2 em padding top button आपका 1.5 em right left 0. Then we have nav that will have position absolute inset 0 margin auto align item center justify content center minimum height 0 and opacity 0 transform scale also 0. then nav UL में जो हमारा अब इन सारा को कमेंट कर देते हैं. you can see what changing it will have. nav UL में हमारा line item center flex direction column and then cap will be 2 em and for nav A font weight 500 font size 18 pixel and text transform हमारा uppercase. then we will have nav a hover जो hover होने पे color bar 2 इसको एग्जैक्टली हमें एक मीडिया स्क्रीन पे इसको शो करना है. सो बेटर लेट्स पुट दैट वन मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 100 to 1000 पिक्सल पे
सबसे पहले हमारा हेडर जो है वो जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन, एंड फॉर टॉगल लेट्स मेक द नेविगेशन में हमारा फंक्शन टॉगल मेन्यू, constant toggle menu equal to document query selector, इसके अंदर हमारा क्लास toggle menu, for navigation same thing, navigation जो हमने nav में रखा था क्लास, and then for toggle menu class list get toggle, तो उसमें हमारा एक्टिव होना है, एंड देन सेम थिंग फॉर मैप। दिस इज द जेएस रिक्वायर्ड। सीएसएस पे हमारा जस्ट टॉगल मेन कर्सर पॉइंटर, बैकग्राउंड इमेज यू आर ओपन, बैकग्राउंड हमारा नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज 30 पिक्सल, width 30 पिक्सल एंड हाइट आल्सो 30 पिक्सल, और above all रखना पड़ा इसे, सो z index 1000 and let's put the transition to say some आपको थोड़ी सी इफेक्ट वगैरह देने के लिए। सो बैकग्राउंड साइज पे हम इफेक्ट देंगे 0.5 सेकेंड इज एन आउट करने के लिए, एंड देन व्हेन टॉगल मेन्यू गेट एक्टिव तो उसकी पोजीशन फिक्स्ड राइट साइड 5% पे स्टे करेगा, एंड बैकग्राउंड इमेज विल चेंज टू क्लोज, और बैकग्राउंड साइज पे हमने ट्रांजिशन दिया है, सो 25 पिक्सल, यू कैन सी दिस, देख रहे इस पे ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है। देन लेट्स गो फॉर नैव। अब इसे हम सबसे पहले जो कमेंट किया उसे रिमूव करते हैं, तो यू कैन सी द नेविगेशन। नैव पे हमारा एक्टिव जब होगा तो पोजीशन फिक्स्ड, मिनिमम हाइट हमने 0 दिया था तो 100%, ओपेसिटी 1, एंड बैकग्राउंड हमारा एग्जैक्टली 1, and chain index near to toggle menu, and then transform scale also 1. ठीक है, you can see this is our navigation CSS we required। ये एक्चुअली सिर्फ मोबाइल में भी शो होगा, डेस्कटॉप व्यू में आपका सिंपली ये डिजाइन। चलें अब चलते दूसरे सेक्शन पे। हमारा दूसरा सेक्शन है हीरो सेक्शन। एज ऑलवेज हीरो सेक्शन, सेक्शन विथ हीरो क्लास, फिर हमें हीरो कंटेंट, रॉ एंड कंटेनर क्लास चाहिए। inside we need a div that will have h1 get your favorite meals delivered now we need a form
form that will have the class search. इसमें हमारा input होगा search. Let's put the placeholder. Placeholder will say search your foods, and we need a button too. So button, this will be a submitting button, so let's put that submit button with class row, and then we'll have the SVG here, just this icon, search icon, SVG, copy, paste. So this is our hero section HTML requirement. चलते हैं इसके CSS पे. So let's commit the section first. Hero section. Hero will have background image URL img1, and background will not repeat. Background position will be center, and size will be cover. Now let's go for hero content. Hero content will be line item center, padding all around will be 2 em, left right 0, top bottom 2 em, and then hero content will have minimum height, that will be in calc 100 ph minus header height. इसमें हमारा header height माइनस करना पड़ा, so header height is 82 pixel. Let's minus that one, 82 pixel. Now hero content div will have max width of 800 pixel. Background will be in RGB, or let's put it first in hex. आपको easy होगा RGB में convert करने के लिए. This is the trick. RGB 0.25, and then padding 2 em all around. Now let's decide the font. H1 and H1 के inside span है, so let's put that one. हमारा font weight will be highest 900. The font weight is 900. Font size will be in clamp. Low is 45 pixel. 10 view width पे हमारा 100 pixel. Line height हमारा font size को follow करेगा, so let's put that one too. This will be a 50, and this will be 105. Now H1 span will have color power of 3. इसमें अब हमारा सर्च यानी फॉर्म है, तो बेटर वी कैन पुट अ फॉर्म ऑल्सो, वॉट एवर यू लाइक. इसमें अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, कैप 0.5 em. And then
form will have background bar for padding 0.6 cm all around, and we'll have the border to 1 pixel solid, bar 3, and then margin top 2 em, इसमें थोड़ी सी होवर इफेक्ट भी देंगे, सो ट्रांजिशन 5 सेकेंड is an out, and for and search get hover, then border color change to bar 3, and then let's put the input CSS. इसमें हमारा font size होगा 16 pixel. It will follow the color bar 2, border 0, outline 0, and then width 100%. और इसमें बैकग्राउंड भी होता है, सो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट and padding for 0.5 em. Now let's go for placeholder. Placeholder में हमारा color bar will be 3 and text transform will be capitalized. Then we have a button fill transparent, stroke bar 3, background transparent, border 0, and then here also in the transition 0.5 second is an out. When search get hover, तो उसकी button stroke color will change to bar 2. So this is zero section requirement जो CSS हमने कंप्लीट किया. अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पे. हमारा दूसरा सेक्शन है आइटम्स. Section with items class. Then we have a container. We have S2 tag with special items. We have and this will be with a swiper slider. So let's go for swiper slider. हमें इसमें responsive page breaker slider चाहिए. Let's copy this one. CSS लिंक करना पड़ा HTML से. Then we have a JS link also. Let's copy this one also. Link to JS. This will also include a default. अब इसकी HTML, let's copy the HTML, copy, paste, and then let's copy its script.
slider 1. इसमें जो हमारा जेस में एक्चुअली ये ऑटो स्लाइडिंग भी होगा, तो लेट्स कॉपी द ऑटो प्ले पार्ट आल्सो. Navigation this, so HTML navigation, remove the pagination, let's paste the navigation, and now we need a autoplay JS. Let's copy this one and remove the pagination with autoplay, और नेविगेशन के लिए भी हमारा JS जो होगा, इस कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, एंड दिस स्लाइडर विल फॉलो द लूप. And for the breakpoint we need, this will be 700 and this will be 1100. 3, 2 and 1. ऑटो प्ले अभी बंद करते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग रिक्वायर्ड CSS HTML, तो इसको दोबारा ओपन करेंगे. अब सबसे पहले अनवांटेड HTML रिमूव किया कर लें इसका. लेट्स रिमूव दिस ऑल. नाउ लेट्स डिजाइन द सुपर स्लाइड. दिस विल बी इन a tag with href. सबसे पहले हमारा इसमें इमेज होगा, that will be imgp1. then we'll have item name class including s3. chicken biryani. Let's copy this card, repeat 3 more time. इसमें इमेज हमारा change to, name also change, hamburger. This will be p3. Name, let's put the rack of lamb. और इसमें हमारा इमेज 4. This will be English breakfast. And at the end we need a, सबसे पहले इसमें हमारा स्लाइडर 2 यूज होना है, तो लेट्स पुट द स्लाइडर नेम आल्सो. दिस विल बी आइटम स्लाइडर. लेट्स कॉपी दिस क्लास, change this one, save it here also. Out of this div we need a button, paste button, column, view all. चलते हैं CSS पार्ट पे. ये हमारा रिक्वायर्ड HTML कंप्लीट हुआ.
and this section we call items. Plus item, this is items, will have padding 2 em top bottom 0 and overflow hidden. So before, let's put the 4, and then we have S2. S2 will follow the different font family. And font weight of 700. Font size हमारा clamp पे lowest 30 pixel, 5B width responsive pair 40 pixel, and then line height same. Let's follow this font size 5 pixel, increase कर, and then text transform capitalize, and letter spacing will be 0.1 em. Now we have item slider, overflow unset, and margin top bottom 2 em auto. फिर हमारा है आइटम स्लाइडर पे we can tag a tag also. Okay, let's use the class overflow hidden, and then for item slider img will have width 100%, height also 100%, max height of 350 pixel, object fit cover, and transition will be 0.5 second is an out. Then for item slider super slide, जब हीट होगा तो उसकी इंसाइड की इमेज ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1. Then we have item name. This will be position absolute, insert 0, width max content, height also max content, padding all over 2 em, background will be RGB, and then transform translate x 600. So we need a transition here also, 0.5 second is enough. And then when item slider super slider get होगा तो item name का transform translate x get 0. Okay, then we have S3
S3 is inside it, so that will also follow the same font family. Let's copy this one. Font weight 400 here, commonly used over. So font size will be in clamp, 20 pixel lowest, 5 to width, 25 pixel, and then for line height, let's copy this one, 5 increase, and then text transform will be capitalize, letter spacing 0.1 em. Okay. Let's put this one to 5. To 7. Okay, and then for item name, S3 will have color. Okay, we have used this color before also somewhere. Let me go towards that class. होगा बोल्ड कलर यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है. Let's put that on. ओके, चलते हैं हमारा एग्जैक्टली अब इसकी जो नेविगेशन की नेक्स्ट और प्रीवियस बटन है उसको डिजाइन करते हैं स्वेपर की. सो दिस वी नीड लेट्स फर्स्ट इंस्पेक्ट इट. प्रीवियस नेक्स्ट बटन, देन let's put it here. इसमें हमारा टॉप 0, बॉटम 0, मार्जिन ऑटो, and then border 1 pixel solid, bar 2, and then background will have bar 1, width 50 pixel, height 50 pixel, and then border radius of 50%. Then इसमें हमारा इसके आइकन्स को जो सेट करना है उसके लिए आफ्टर, दिस इज रिक्वायर्ड क्लास. इसमें हमारा फॉन्ट वेट 900, font size 20 pixel, and color bar put it to ठीक है. इसमें हमारा नीचे है अपना पेज बटन जो ऑल ओवर पेज में यूज होना है. सो लेट्स डिजाइन दैट वन. पेज बटन will have font size 18 pixel and color bar 2, text transform capitalize, letter spacing 0.1 em, and then text align center,
background transparent, and then we need a border also. So border will be 1 pixel, solid bar 2, and padding will be 0.5 em, 1.5 em. And we will have border radius of 25 pixel. When page button get hover, तो उसकी background bar will change to 2 and color will change to bar 4. इसमें फिर हमने एक लोकेशन पे पेज एक्टिव बटन भी यूज करना है. सो लेट्स पुट दैट ऑन पेज एक्टिव button, and when page active button get hover, that will do just opposite. But in this section we need a item कि जो पेज बटन जो है उसकी मैक्स विड्थ, मैक्स कंटेंट, मार्जिन 0.2. I think we need 2 em here. Left right. Okay, now looks good. चलते अगले सेक्शन पे. अगला सेक्शन है हमारा ज्वाइन. सेक्शन विथ ज्वाइन क्लास, फिर कंटेनर भी होना है inside. Then we have h2 that is saying join us. So join cards with column, and we have a card, join card with jcard name. Inside we are going to keep a icon. Let's copy the icon, that's in SVG. उसके बाद हमारा S3 title that will say partner. Let's copy this all. The key card repeat है, so let's copy this more 3 times, and then we have another icon that let's copy that to copy paste teams. The last icon is job. ये HTML था. अब चलते हैं एग्जैक्टली इसके CSS पे. Join section, we have join class that have background bar 2, padding 2 em, and then padding 2 em. फिर इसमें हमारा join container will have background image,
जो रिपीट नो रिपीट एंड देन बैकग्राउंड पोजीशन इसमें हमारा राइट साइड, और फिर इसकी साइज होगी कंटेंट। join S2 will have color R4. Okay, and then text align center। इसमें हमारा join cards have grid template column repeat auto fit minimum and maximum card will have 220 pixel 1 FR and the gap is 2 em max width 800 pixel margin 2 em auto। Let's put the J card CSS fill bar 2 text align center and then background bar 4 border 1 pixel solid transparent and then padding around 2 em and border radius of 25 pixel। When join card get hover तो उसकी fill bar will change to 4 and then background will be transparent, border color change to bar 4। Okay, now we have J card के inside S3 है तो उसमें हमारा मार्जिन टॉप 1 em देना है एंड देन ट्रांजिशन इफेक्ट देना पड़ा कि इसमें भी होवर इफेक्ट हमने डालना है, सो लेट्स पुट दैट वन। एंड व्हेन J card get hover तो S3 color will change to bar 4। ठीक है, we have already achieved that. These are all the designs we require for CSS। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे। हमारा अगला सेक्शन है पेज section with base and container class। Then we have a title with row। Then we have S2 that says page items for you, and for there is a tag says view all। इसके अंदर हमारा फिर कार्ड्स है that have column and grid together, and this have card with image then we have a content card content with column
इसमें हमारा S3, then a tag with base button active, और इसका टाइटल होगा ऑर्डर नाउ। कार्ड रिपीट होना है, so let's copy this card, paste 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 4 times. Image will be b2, should be 3, should be 4. Let's change the title. Pasta, paste salad, avocado toast, so these are the HTMLs. चलते हैं CSS पे। This section we call a base, base padding 4 em, top button left right 0। हमने कहीं एक रिपीट तो नहीं किया है, so let's check that one। यहाँ भी पुट कर सकते हैं, but it's okay, let's make it different। Title, flex, wrap, align item center, justify content space between और cap 2 em। इस टाइटल के लिए ये हुआ, and then inside title there is a tag, तो उसकी font size 18 pixel, color are 2 and text transform capitalize। when title a get होगा तो उसकी color are change to 3। Now we have cards, इसमें padding top button 2 em 0। कहीं पे हमने ये रिपीट किसी को नहीं दिया, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर कार्ड्स के अंदर जो कार्ड है उसको कर्सर पॉइंटर, पोजीशन रिलेटिव, ओवरफ्लो हिडन, and then inside card there is image, so that will have width 100%, height also 100%, object fit cover, and max height इसमें हमारा let's put it 380 pixel, and then transition to 0.5 second is an out। Now when card get होगा तो उसकी इमेज filter lower 10 pixel, okay।
Then we have a card content. इसमें हमारा position absolute, text align center, align content space between, insert 0, just put that on top. उसके बाद इसमें हमारा background will be in RGB, padding 2em, transform translate to y 600 pixel, and then transition to 0.5 second पे. Now when C card get होगा तो C content card content transform translate to y 0. ठीक है, I think we have completed this section also. चलते हैं दूसरे सेक्शन पे. हमारा दूसरा सेक्शन है नॉन बेज section, and this section is exactly copy of base. So let's copy this whole section, let's change it to non beige section. हमारा non beige का हो गया. Then let's change this class also, non beige class. And we have to change title non beige item for you, and let's change the images P1, P2, P3 and P4. Change the title to chicken biryani, and then we have hamburger, rack of lamb, and then we have English, breakfast, चलते हैं इसके CSS पे. HTML ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एंड वी हैव नॉन बेज जो रिक्वायर्ड है, that will follow this same rule of join. This is इसमें container, just remove the container, and put it here. तो अब इसमें हमारा सबसे पहले इसमें ये H2
it will change to white. It is H4. बाहर H4 हमने कहीं दिया हुआ है स्पेशली किसी को. Let's put that one. Here it is. और कहीं हमने यूज किया इसको सेपरेटली यहीं पे. So let's put the one non-base S2 and then title non-base title A. Okay. एक्स्ट्रा CSS नहीं चाहिए था, एग्जैक्टली कॉपी था, थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड थी तो हमने इनपुट कर दिए. चलते हैं दूसरे सेक्शन पे. हमारा ये सेक्शन है ऐप सेक्शन. सेक्शन विथ ऐप क्लास. देन वी हैव अ कंटेनर. This is app body with raw class. Then we have a class named phone. Inside we have a image. It is phone image. Then we have a logo. We need an app content with S2 tag. Download the app and we need some list out, so let's put that one. List में हमारा let's copy the list from here, put it here. Then we need a logos for that will have a tag. So there is image, so this will be a Google, and another we need a Apple. App content exactly inside this div. चलते हैं इसके CSS पे. The section we call app. So सबसे पहले हमारा ऐप में है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड URL with image pg1 and URL with image pg2. Now background repeat, no repeat. Background position left bottom, पहली वाली बैकग्राउंड की, एंड दूसरी वाली बैकग्राउंड को राइट टॉप में. Just I think we have to do it just opposite. Sorry, पहली वाली राइट टॉप पे एंड दूसरी वाली हमारी लेफ्ट बटन. ओके, एंड देन we need a padding
4em top bottom. इस पे बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं या बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर सकते हैं. नो, बोथ आर विथ सेम एट्रीब्यूट. सो बॉडी, इसमें हमारा फ्लैक्स रैप होना है. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, and then we'll have the gap 2em, max with 800 pixel. Max with 800 pixel, and let's check this one in. Okay, max with 800 pixel, margin 0 auto. ठीक है, exactly center पे. And then phone class जो है वो position relative. आप डायरेक्टली इमेज completely with logo डाल सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ी सी डिफरेंट सोचा तो इस वजह से ये डिजाइन कर रहा हूँ. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, align item center, inside phone logo that will have position absolute, inset 0. ये चीज एग्जैक्टली इसमें चाहिए हमारा. Not a top one, we need inside one. Position, and then this doesn't need this one. Sorry. And here in logos we need a we miss one class, raw class for display flex. Now we can see that it's exactly at center. And then we have app content, align self center, ये बार ऊपर भाग जा रहा है. Then we have app content UL that will have padding all around 2em, right left 0, top button 2em. Then need a app content UL के जो directly let's put the list, उसमें position relative, padding left 2em, then we need a app content की जो li plus li will have margin top 1.5em, and exactly we put this one in relative. So क्यों हमने relative put किया? क्योंकि हमने यहाँ पे content 0 will be in after. Let's put it in before. अगर before यूज करेंगे तो it's already at left side. Position absolute, top 0, left 0, bottom so 0, and then margin auto
इसमें हमको बैकग्राउंड इमेज चाहिए, दैट विल हैव check background repeat no repeat background position center and background size have contain. Okay, we need to decide the width 25 pixel, height 25 पिक्सल। ये मुझे इरिटेट करने लग गया, बार बार ऊपर चला जा रहा है। नाउ लेट्स गो फॉर logos that will follow the flags wrap align item center cap to em. And for the logos there is image inside जिसकी max height 50 pixel. Almost they look same, let's put it 40. अगर ये हमने कहीं यूज किया है तो लेट्स चेक दैट वन, फ्लैग्स रैप का रूल अलाइन आइटम, दिस इज ओनली है। और हमारा ये सेक्शन भी है कंप्लीट। चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन है हमारा फैक्ट सेक्शन, फ्रीक्वेंटली FAQ, frequently asked question section, that will have section with the class of FAQ. Then we have a container inside, and then we have a fact content with S2 tag FAQ as a title. Then we have a tab with column, इसके अंदर हमारा टैब कार्ड है, and that will have a tab with row, and the title is what is meals, and this have the tab content saying something with row, and I put it 9. ये कार्ड हमारा रिपीट है, so let's copy this one, paste it, just change the questions. Let me copy the question. What is meals? What are the accepted payment methods? What are meals working hours? Let's save this one, check. अच्छा, अब चलते इसके CSS पे। We have already completed the HTML part. So सबसे पहले let's comment the section, fact section. We have a fact class that will have background with image, background 5, and then also color, and this will not repeat. इसकी position होगी background position right bottom, and background size 200 pixel,
padding 4 em top button. Background size, background no repeat, right button 200 pixel. ओके चलते हैं इसके FAQ कंटेंट पे। इसकी मैक्स विड्थ होगी 800 पिक्सल एंड मार्जिन 0 ऑटो। Now for FAQ S2, हमने S2 को कहीं पे सेंटर्ड यहाँ पे किया। That join section have same thing. Let's f.faq S2. Okay, now let's go for tabs. There is a tabs with the gap 1 em, margin top 2 em, then we have a tab card that will have background bar 4 or padding all around 1 em. इसके इनसाइड हमारा है टैब, so होगा कर्सर पॉइंटर, पोजीशन रिलेटिव, font size will be clamp, lowest 18 pixel, 5 view width पे, इसकी highest 25 pixel and opacity 0.7, padding right 2 em, इसमें हमने ट्रांजिशन डालना है 0.5 सेकेंड, इज एन आउट। When tab get active तो उसकी opacity 1 हो जाएगी। Let's first of all complete the JS। इसके लिए JS हमारा चाहिए tab toggle, instance tab document query selector with class dot tab, then for tab for each we have here with 8 here with something tab dot for each layer. Okay, here with this and this. Add event. Let's copy this one. मैंने already लिखा हुआ है, so let's copy this one and paste it here.
क्लिक होगा तो एक्टिव होगा होना है उसके नेक्स्ट सिबलिंग पे। सो दिस इज द डिज़ाइन। चलते हैं इसकी CSS पे। लेट्स कंप्लीट द CSS पार्ट। इसमें सबसे पहले है टैब, आफ्टर, टैब, बिफोर, कंटेंट, ब्लैंक, पोजीशन, एब्सोल्यूट, टॉप 0, राइट 0, bottom 0, margin, auto, height 3 pixel, width will be in clamp 18 pixel, 5 view width पे 25 pixel, and the background color will be 3। इसमें हमने ट्रांजिशन देना है 0.5 सेकेंड ईज एंड आउट करने के लिए। देन वी हैव टैब, आफ्टर, जो ट्रांसफॉर्म, रोटेट 90 डिग्री करेगा स्टैंड बाय मोड पे। when tab get active तो उसकी ट्रांसफॉर्म रोटेट 0। ठीक है, इट्स वर्किंग। Let's go for tab content। ये कोडियन है जो CSS से ही बना सकते हैं, and you can go with the JS too। Position, absolute, opacity 1, minimum height 0, transform scale 0, transition, opacity में देना है, copy this one, paste 0.5 second, is and out। when tab content get active तो position relative, opacity 1, minimum height 100%, transform scale 1, ओके। सो हमारा ये FAQ सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, एंड आई थिंक दिस इज आवर सेकेंड लास्ट सेक्शन। दिस इज टेस्टिमोनियल। section with testimonial, class and container. We have s2 tag, says how you love us. Let's copy sweeper, auto play। इसमें हमें सिर्फ पेजिनेशन वाली चाहिए, so let's copy this one, copy, paste, and for the JS we need only
this one. Let's copy this or slider to copy paste. इसमें नेविगेशन नहीं चाहिए, पेजिनेशन ओके, space between keep it 60 and let's set this one, copy and चलते हैं इसके HTML चेंज करेंगे, जो रिक्वायर्ड HTML है वो पुट करना पड़ा। सो सबसे पहले हमारा है let's remove the extra HTML. This is our let's put the quotation, simple कोई quotation, let's put that one. To live a full life you have to fill your stomach first. Then let's put the customer name, if required then let's put that title, position, whatever you can say, copy paste. अब चलते हैं इसके exactly CSS पे to beautify it। सबसे पहले हमारा सेक्शन का नाम है टेस्टिमोनियल एंड टेस्टिमोनियल। फर्स्ट class we have is testimonial and the required for testimonial CSS जो है वो ऑलरेडी हमने कहीं पे पुट किया हुआ है, so let's put that one there. I think this is the place. Now let's go to exact section. Testimonial S2, text align center. Then okay, we have to name the slider to testimonial slider. Let's copy this one. इसमें भी अभी ऑटो प्ले बंद करना पड़ा, we'll open it later. Now let's go for the design. The testimonial slider that will have max width of 600 pixel, margin top 2 em, and then testimonial slider have super slide. Just keep padding 2 em all around, and then have background bar 4. Now we have quotations that will have font size of 20 pixel, and then we have H5. For H5 will have same font family, dancing. It's the customer name, and font size will be 20 pixel. Letter spacing 0.1 em, and then padding 1 em top, right 0, bottom 0.25 em, left 0. Now we have H6 too, so font weight will be 500, font size 12 pixel, text transform
lowercase, इसमें पेजिनेशन जो है ये हमारा इसकी पोजीशन will be relative inside 0 important and margin top 2 em. And then we have button super bullet. We need this class इसकी कलर चेंज करने के लिए, सो बैकग्राउंड पार्ट 2. ओके, आई थिंक वी गॉट दैट. अब चलते हैं लास्ट सेक्शन, सब फूटर सेक्शन. footer have a container, इसके अंदर फिर है footer class जो मल्टी लिंक वगैरह with title h4 means URLIA, then have about us, job, become partner, then join as driver, let's copy this div. Title is support, this will be contact us, help center, terms of service, privacy policy. Then we have another div that is followers, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Now we have another div that has for saying download app, URLIA with logo is Google, same thing for Apple. Now we have last tip. This is copyright, have a logo, and then p tab,
in 2022 new coder. So this is our required HTML for footer. This is the last HTML we need till now. अब चलते हैं finally CSS पे. So this is for footer section. Footer section में हमारा footer will have background bar 2 and padding 4 em. I think we have repeated somewhere this one. Background 2 तक है. Then we have footer flex wrap justify content space between and gap is 2 em. Now for h4 font weight is 500, font size 25 pixel, text transform capitalize, and then color is bar 4, margin bottom 0.5 em. Now footer li plus li, padding top 0.5 em, footer ula have font size 18 pixel, color is this, and text transform capitalize. Then footer ula get hover will change to color bar 4. Now we have copyright section that will have text align center, margin top 2 em, and for copyright में जो p tag है उसकी हम font size छोटी कर देते हैं 12 पिक्सल पे, and color bar 4 और then margin top 1 em. अब एक बार इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं. if something is remaining then we'll put that one, क्योंकि बहुत सारी कोड वन टाइम पे लिखने पे इश्यूज वगैरह आ सकते हैं. so let's check one time. there is something that we need to change or add, we'll add that one. I think all sections look good still now. तो चलिए इसे फुल स्क्रीन में हम इसे रिव्यू करेंगे फाइनली. फॉर दैट लेट्स ओपन द ऑटो प्ले सिस्टम. इसके लिए हम ऑटो प्ले ओपन कर लें.
This is our design. क्रोम के ब्राउज़र में कुछ ज़्यादा कल से मैं इशू फील कर रहा हूँ, लोडिंग इशू वगैरह चीज़ें आ रही, मे बी लैपटॉप इशू और ब्राउज़र इशू पे, लेकिन फायरफॉक्स डेवलपर पे कोई इशू उतनी नहीं आ रही है। दिस इज जो एग्जैक्टली हमने देखा वो एग्जैक्टली वो डिज़ाइन हम यहाँ पे, दिस इज आवर टेस्टिमोनियल स्लाइडिंग। सर चलते हैं इसको एग्जैक्ट मोबाइल व्यू पे। लेट्स सी द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ दिस डिज़ाइन। It's look like this in mobile view. लोडिंग इश्यूज हो रहे हैं, मे बी आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी इसके स्क्रीन पे व्यू करने पे। बाकी आप इस डिज़ाइन को अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं बना के। इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव और अचीवेबल डिज़ाइन और इजी है। और आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि कुछ और भी इजी वेब डिज़ाइन वगैरह लेकर आऊँ। और मेरे जो म्यूट कोडर जो वेबसाइट है उस पर एक्जैक्टली हमने एक नया लिंक दिया हुआ है जिसमें आप अपनी क्या कहते हैं डिज़ाइन को रिक्वायर करते हैं फिग्मा में या HTML में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव समथिंग यू वांट टू डिज़ाइन और इफ़ यू वांट टू गेट इट, यू कैन ट्राई फ्रॉम देयर आल्सो, विल हेल्प यू। देयर आर सम चार्जेस, विल चार्ज फॉर दैट आल्सो। अगर इजी है तो वो कुछ रिक्वायर्ड है तो आप वीडियोज़ वगैरह के थ्रू भी आप उससे सॉल्व रिक्वायर्ड मांग सकते हैं, मैं वो चीज़ आपको हेल्प करूँगा। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।